तो बेटा conduction of nerve impulse along nerve fiber. Nerve fiber के along I have told you that this is nerve fiber और यहाँ से था सोमा या सेल बॉडी. सेल बॉडी से इम्पल्स आई नर्व फाइबर पे. नर्व फाइबर में ये क्या है? दिस इज एक्सोलेमा. Due to differential concentration of ions across exolemma inside, it is negatively charged. ये negative charge है. Inside is differential concentration of ions है. Inside is negative charge and outside the exolemma is present positive charge. Throughout the, ये कौन सा नर्व फाइबर है? रेस्टिंग नर्व फाइबर या पोलराइज्ड नर्व फाइबर. दिस इज रेस्टिंग या polarized nerve fiber having potential difference. PD मतलब potential difference अगर हम मेजर करें तो ये है -70 मिलीवोल्ट. माइनस हमने क्यों लिया? बिकॉज इनसाइड द एक्सोलेमा देयर इज प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज. तो हमने अदरवाइज दोनों का अगर हम पोटेंशियल में डिफरेंस देखें, चार्जेस में डिफरेंस देखें तो -70 है. आउटसाइड मोर पॉजिटिव, इनसाइड लेस पॉजिटिव. ऐसे नहीं कि नेगेटिव चार्ज ही है, इनसाइड लेस पॉजिटिव है. देयरफॉर लेस पॉजिटिव मींस नेगेटिव. तो इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया. बट अदरवाइज अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इन दोनों में बाहर और अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस 70 है. अगर बाहर लेट अस से लेमन लैंग्वेज है, बाहर अगर 100 पॉजिटिव है तो अंदर 30 पॉजिटिव है. तो दोनों में डिफरेंस है 70. बिकॉज अंदर लेस पॉजिटिव है तो इसलिए हमने इसको साइन दे दिया नेगेटिव. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है. तो अंदर इनसाइड इज लेस पॉजिटिव एंड इज रिगार्डेड एज नेगेटिवली चार्ज एज कंपेयर टू आउटसाइड. ठीक है. अब जो है इसमें क्या हुआ बेटा? कि some impulse is given to the nerve fiber. It causes opening of sodium channels. It causes opening of sodium channels in region A. सिर्फ A वाले region में. In region A, it causes ठीक है. This is action potential is generated in part A of nerve fiber. ठीक है. ये क्या है? Some impulse is given to the nerve fiber, जिससे मैं लिखवा दूंगी आपको, पहले समझना है.
जिससे सोडियम चैनल्स खुल गई। अब क्या हुआ बेटा, क्योंकि बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, therefore lot of sodium moves inside। ये बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये थ्रू आयन चैनल। lot of sodium diffuses means passive transport, diffuses inside through sodium channels, open sodium channels। When lot of positive charge it moves inside, then what happens, then inside becomes more positive। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, बाहर तो जा ही नहीं रहा, कुछ अंदर आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, ड्यू टू विच inside becomes more positive as compared to outside। तो outside becomes, इससे क्या हुआ, in the region A inside becomes positive charge as compared to outside which is negatively charged। ठीक है, ये है रीजन ए। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कितना, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो +45 मिलीवोल्ट। रेस्ट इज, बाकी सब पार्ट में अभी भी अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है। बेटा आफ्टर अबाउट 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड तक सोडियम गेट्स खुले रहते हैं, सोडियम चैनल्स खुली रहती है। उसके बाद सोडियम चैनल्स बंद हो गई और पोटेशियम चैनल्स खुल गए। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स after 1 milliseconds and opening of potassium channels in region A, in part A। पार्ट ए में सोडियम चैनल्स बंद हो गई, पोटेशियम चैनल्स जो है वो खुल गई। ये जो था यहाँ पे क्या था, पार्ट ए इज एक्टिव हो गया था ना, डीपोलराइज, और एक्टिवेट। अब क्या हुआ बेटा, अब ये क्या है, पोटेशियम चैनल। पोटेशियम कहाँ पे ज्यादा था, अंदर ज्यादा है। नो, पोटेशियम स्टार्ट्स मूविंग आउटसाइड। अब सोडियम की मूवमेंट रुक गई और पोटेशियम की मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, एंड इंपल्स। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है,
कि जैसे ही जैसे ही पोटेशियम चैनल्स खुला तो अब क्या हुआ बेटा, चार्ज कैसे मूव करता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या है कि ये चार्ज इधर से इधर मूव कर गया और इधर से इधर मूव। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अब अगला जो पार्ट है B part में, after 1 millisecond the positive charge inside it moves to region B and outside it moves to A। मतलब रिवर्सल हो गया A और B में। अब जो नर्व इम्पल्स है वो A से B में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि A पार्ट में ये हुआ और सेकंड में क्या हुआ, nerve impulse moves to region B whose sodium channels open। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, रीजन बी में सोडियम अंदर जा रहा है। यहाँ पे सोडियम अंदर जा रहा है, कौन सा पार्ट है, ये है बी। ठीक है, जिससे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ, जिससे क्या हो रहा है बेटा, जो पार्ट ए है वो फिर अपनी पहली पोजीशन पे आ गया, अंदर नेगेटिवली चार्ज, बाहर पॉजिटिवली चार्ज। और जो रीजन बी है वो रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहां पे अब now what happens that region A gets again polarized and region B gets depolarized। Do you get me? समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है, Yes, ma'am. चलो पहले ये बना लो थोड़ा सा और फिर मैं आपको लिखवाती भी हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो राइट डाउन, in resting nerve fiber, in resting nerve fiber the exolemma is permeable to potassium ions, permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। nearly impermeable, बिल्कुल नहीं, थोड़े बहुत। therefore lot of potassium moves outside, lot of potassium moves outside and only few sodium moves inside, few sodium moves inside। therefore inside of the exolemma is less positive as compared to outside of the exolemma। inside of the exolemma is
less positive as compared to outside of the axolemma. This creates potential difference of minus 70 millivolts. Potential difference of minus 70 millivolts across axolemma. Here minus indicates the charge present on the inside of axolemma. Charge present on inside of the axolemma. Next point आ जाइए. When the nerve impulse reaches the nerve fiber. When the nerve impulse reaches the nerve fiber, comma, it causes opening of voltage gated sodium channels in region A. Due to which वोल्टेज के बाद क्या बोला? voltage gated sodium channels in region A. उसके नीचे एरो ही लगा लो. Lot of sodium moves inside the axolemma. Due to which negative charge first becomes zero. And then becomes positive. And this generates action potential of plus 45 millivolts. Next point. Sodium channels remain open for 1 millisecond only. Sodium channels remain open for 1 millisecond only. After which they close and voltage gated potassium channels open. In part A या in region A. Full stop करके next point. Lot of potassium moves from inside towards outside of axolemma. Lot of potassium moves from inside towards outside the axolemma. The potential difference decreases from plus 45. The potential difference decreases from plus 45 to 0 and again to minus 70. This process is called as repolarization. बेटा ऊपर वाले पॉइंट में जहां पे एक्शन पोटेंशियल लिखा था, दिस जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल ऑफ प्लस 45 millivolts and the region A is said to be depolarized. लिख लो वहां पर. And the region A is said to be depolarized. DEPOLARIZED. Depolarized.
और अब हम कहते हैं कि जब पोटेशियम चैनल्स खुल गई फिर दोबारा से रिवर्ट बैक वहीं पे हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, potassium channels are slow to close, and they start closing when the potential difference reaches -70 millivolts. They start closing, है ना, बंद होनी शुरू हुई थी, अभी बंद नहीं हुई थी। As they are slow to close, as they are Ma'am, as it reaches. they start closing when the potential difference reaches -70 millivolts. As they are slow to close, comma करके, therefore the potassium ions continue to leak out. अभी क्योंकि पूरी तरह बंद तो हुए नहीं, therefore potassium ions continues to leak out, and the potential difference reaches to -90 millivolts. Potential difference reaches to -90 millivolts. Full stop करके, the nerve fiber is said to be hyperpolarized. The nerve fiber is said to be hyperpolarized. Next point, to maintain the potential difference, अभी हम रीजन ए की ही बात कर रहे हैं, to maintain the potential difference of -70 millivolts, comma, the sodium potassium pump starts and maintains potential difference of -70 millivolt. जो एक्स्ट्रा पोटेशियम आयंस बाहर आए थे उनको अंदर भेज दिया गया और अंदर से कुछ सोडियम आयंस बाहर चले गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर -70 मिलीवोल्ट की आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिर मेजर पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, when the sodium channels in region A close down या gets closed, when the sodium channels in region A gets closed, comma, it causes opening of sodium channels in the next adjacent region, that is B. Which gets depolarized like region A, जैसे हुआ था, which gets depolarized like region A. Full stop करके, after 1 milliseconds, the sodium channels in region B gets closed. Sodium channels in region B gets closed, and it passes the impulse to the next adjacent region, that is C.
that is C. Next point है, the B passes the impulse to C and not to A. The B passes impulse to C and not to A because depolarization occurs for 1 millisecond. Depolarization occurs for 1 millisecond and repolarization takes more than 1 millisecond. More than 1 millisecond. The nerve fiber takes the fresh impulse only. The nerve fiber takes the impulse, fresh mat likho, takes the impulse only if its potential difference is minus 70 millivolts. Minus 70 millivolts. When B is to pass the impulse, when B is ready to pass the impulse, comma, C has potential difference minus 70 millivolts. C has potential difference of minus 70 millivolts. Whereas A is in the recovery phase. ये अभी minus 70 पे लेके आ रहा है. Whereas A is still in its recovery phase. Therefore, B passes impulse only to C and not to A. B passes impulse only to C and not to A. तो इसलिए इम्पल्स हम कहते हैं एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है. ये नहीं कि B से A में चलेगी, कभी B से C में चलेगी, ऐसा नहीं. This shows that the impulse flow is unidirectional in nerve fiber. This shows that flow of impulse is unidirectional in a nerve fiber. It is not reversed back. It is not reversed back. ठीक है जी. नेक्स्ट एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए. In a nerve fiber, when the current flows, comma, it flows from A to B inside. It flows from A to B inside and B to A outside. And B to A outside to complete the circuit of current flow. To complete the circuit of current flow. That is why B से A की तरफ, A से B की तरफ, इसका पॉजिटिव यहाँ, इसका पॉजिटिव यहाँ पर. That is why the polarity gets reversed. Polarity gets reversed when action potential is generated in a part of nerve fiber. Action potential is generated
in a part of nerve fiber. ठीक है बेटा, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। एक चीज मैं और आपको दिखाऊंगी। This is -70 millivolts +45 और ये है 0 मिलीवोल्ट। जब नर्व फाइबर रेस्टिंग पे है तो हम ये लेते हैं, फिर एक्टिव हो रहा है, 0 आया एंड +45 पे आया। ये मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल है। दिस इज डीपोलराइजेशन। पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। उसके बाद +45 से ये फिर रीपोलराइजेशन शुरू हो रही है। यहां पे आ गया, बट क्योंकि पोटेशियम चैनल्स अभी बंद नहीं है, इसे पोटेशियम चैनल्स लीक हो रही है। पोटेशियम चैनल से पोटेशियम आयन लीक हो रही है। Therefore, this is, ये वाला जो रीजन है, this is called as hyperpolarization। और फिर आ गया यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट। यहां से यहां तक दिस इज रीपोलराइजेशन। और ये जो रीजन है दिस इज हाइपरपोलराइजेशन एंड दिस इज एक्शन पोटेंशियल। दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। बनाओ ये जरा जल्दी से, ड्रॉ इट। Why the, मैं अगेन रिपीट, why the transfer of impulse या movement of impulse is unidirectional through synapse as well as along nerve fiber। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, depolarization of nerve fiber is due to opening of dash। depolarization of nerve fiber is due to opening of dash। नेक्स्ट क्वेश्चन है, voltage gated potassium channels are responsible for। voltage gated potassium channels are responsible for dash। हम रिपीट करना। opening of voltage gated potassium channels are responsible for dash। नेक्स्ट है, the drugs used in anesthesia। किसी जगह पे बेटा एनेस्थीसिया दे देते हैं किसी नर्व में, जिसके कारण एक पर्टिकुलर ऑर्गन की सेंसेशन खत्म हो जाती है, वहां पे पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो क्यों होता है? द ड्रग्स यूज्ड इन एनेस्थीसिया causes blockage of dash channels। causes blockage of dash channels।
नेक्स्ट आ जाइए, द हाइपरपोलराइज्ड नर्व फाइबर, द hyperpolarized nerve fiber has potential difference of dash, has potential difference of dash, and it becomes polarized, it becomes polarized by dash transport. आपको बताना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाय डैश ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट है, in sodium potassium pump, in sodium potassium pump, dash moves outside, dash ions move outside, and dash ions move inside, dash ions move outside and dash ions move inside by consuming ATP, by consuming ATP and carriers. Next है, which ions are abundant in, which ions are abundant in exoplasm, exoplasm. ठीक है जी. नेक्स्ट एक डिजीज आ जाता है बेटा, पार्किंसंस डिजीज. ये मैं बता दूंगी बट क्वेश्चंस लिख लो आप. पार्किंसंस डिजीज is caused due to deficiency of dash. Parkinson's, Parkinson'. Parkinson's disease. पार्किंसन, कभी सुना है आपने पार्किंसन बेटा? पार्किंसन में होता है बेटा कि हमारी बॉडी जो है वो शेक करती है, हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती. दैट इज पार्किंसंस डिजीज. Parkinson's disease is caused due to deficiency of dash. और लास्ट आ जाता है अल्जाइमर्स डिजीज. अल्जाइमर्स डिजीज होता है जब इंसान को भूलने की बीमारी हो जाती है. जनरली एजिंग डिजीज है ये, जब बूढ़े हो जाते हैं तो पार्किंसन की अब भूल जाता है लोगों को. पार्किंसन नहीं, सॉरी, अल्जाइमर्स है ना, लोग अपने घरों का रास्ता भूल जाते हैं. तो अल्जाइमर्स, ALZIMER', Alzheimer's disease is caused due to deficiency of dash, is caused due to deficiency of dash. चलो ये करो जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं. लो 5 मिनट इसको और फिर हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 1 का आंसर है एट साइनैप्स लिखेंगे, बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग द इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. है ना, हाइड्रोलाइज टूट जाता है. बिकॉज द न्यूरोट्रांसमीटर गेट्स हाइड्रोलाइज्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग द इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, and therefore it cannot pass the impulse in the reverse direction, and therefore it cannot pass the impulse to the in the reverse direction. और दूसरा है along the nerve fiber, वो आपको पता ही है. along the nerve fiber because because repolarization takes place more than depolarization. Therefore the region B passes impulse to C and not to A. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सरगम. Ma'am, because of the opening of sodium channels.
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी बोलते चलो बेटा, मुझे याद नहीं ना। Ma'am, depolarization of nerve fiber is due to ड्यू opening. टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, बिल्कुल ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स अकर्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हरगुन। नाम ये पता नहीं। क्वेश्चन बोलो क्या है। ओपनिंग ऑफ voltage gated potassium channels are responsible for। हाँ आप बताओ बेटा, डीपोलराइजेशन के लिए तो सोडियम चैनल्स खुल रही थी, ऊपर क्वेश्चन में कहा, तो पोटेशियम चैनल्स खुलेंगी तो क्या हो जाएगा। डी का रिवर्स क्या है, repolarization। रीपोलराइजेशन, बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स कॉजेस रीपोलराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट शिवांशी। हाँ जी शिवांशी। Yes, ma'am. क्वेश्चन बोलो, वाला नहीं आता. क्वेश्चन तो बोलो। Ma'am, the drugs used in anesthesia cause blockage of dash हाँ channel. आप बताओ एनीबडी, क्योंकि वहां पे सेंसेशन नहीं हो रही है जहां पे के लिए एनेस्थीसिया लगाया, कोई बताए कि वो कौन सी चैनल्स ब्लॉक करती है। हाँ जी हरगुल। मैम voltage वोल्टेज गेटेड, gated sodium channels। बिल्कुल ठीक है। सोडियम चैनल, sodium वहां पे channel। नर्व इंपल्स जाएगी ही नहीं, और नर्व इंपल्स नहीं गई तो फिर वो रीजन डेड के बराबर है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट सीरत आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The hyperpolarized nerve fiber has potential difference of minus 90 millivolts. बिल्कुल ठीक है। हाइपर पोलराइज्ड नर्व फाइबर हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ माइनस 90 मिलीवोल्ट। हाँ जी नेक्स्ट कृषा आप बताइए। मैम उस क्वेश्चन में ये भी था कि इट बिकम्स पोलराइज्ड बाय डैश ट्रांसपोर्ट। हाँ हम ये भी बता दो, ये भी नेक्स्ट बोलिए कि हाइपर पोलराइजेशन। अर्नव हम देख रहे हैं, क्वेश्चन देख लो। हाइपर पोलराइजेशन इज ड्यू टू, हाँ जी, इट हैज potential difference of minus 90 millivolts and it gets polarized by, हाँ जी बेटा बोलो। बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं बेटा, एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप, it gets polarized by active transport, active sodium potassium pump transport। ठीक है, एक जगह ज्यादा आ जाए लोग तो उनको धक्का मार के ही तो बाहर निकाला जाएगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट अतिभा। I mean, sodium and potassium pump. Sodium ions move um, हाँ, inside. in sodium potassium pump the sodium ions move outside and potassium ions move inside. 3 sodium moves outside and 2 potassium moves inside by using ATP and carriers. हाँ जी, any other question left? हरगुन। हाँ अतिभा बोलो। Disease वाला. बोलो अच्छा डिजीज वाला है, लिख लो अब ये क्वेश्चन। Parkinson's disease is caused due to deficiency of dopamine. DOPAMINE. Parkinson's disease is caused due to deficiency of dopamine, which Spelling is repeat करना. DOPAMINE, which is a neuroinhibitor. Which is a neuroinhibitor. न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेटा वो इनहिबिटर भी हो सकता है, एक्टिवेटर भी हो सकता है, विच इज ए न्यूरो इनहिबिटर, ड्यू टू विच द वॉलंटरी मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। वो हिलते रहते हैं, वहां पे इंपल्स आती रहती है, ड्यू टू विच वॉलंटरी मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड।
नेक्स्ट आ जाता है अल्जाइमर्स डिजीज, भूलने की बीमारी, ब्रैकेट में लिख लो डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस. It is caused due to deficiency of acetylcholine. Acetylcholine. It is caused due to deficiency of the neurotransmitter acetylcholine. In basal ganglia, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है इन बेसल गैंग्लिया. ठीक है जी. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका सारा है नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये सारा आपका था न्यूरल कंट्रोल का, क्योंकि आई एंड ईयर आपके सिलेबस में नहीं है. यहां तक हमने करना था, सो हमने कर लिया. अब बेटा आज थोड़ा सा हम जल्दी छोड़ रहे हैं